So I hope now we are live. So welcome everyone to Bratati science class. I'm very new to the live session. I know I gave you the time for 11 a.m. So at least 11 a.m. if you join, that will be great. And you can tell me today that sound is audible or not. My first live session. I just want to applaud for all of you who has joined, because it was like 650 views during the live session, which is a great achievement of me. Thank you very much for showing your support and love. So Bratati science class is done by me. I am Bratati, who is a master's, and I have B.Ed also. So at present I am a public speaking expert in Planet Spa, and also I have my YouTube channel where I love teaching is my passion, and my main aim is to go to the maximum number of students throughout the world who can sit and enjoy YouTube and also learn at the same time. So let's start today. Our topic is class 10. So we are starting class 10 today, and my plan is, like, if you go through the playlists, you can see class 7, class 8, class 9, all the chapters are there recorded, and class 10 will start today itself. So let's start with chapter number 1, which is the chemical reaction and equation. Okay, so please bear with me and keep writing on the comment box so that I can see that whether my board is visible to you or not, and I am visible to you or not. So you can, is my height and everything is okay? I'm not sure how does I look. So I hope it is still this. Do I need to make it a little more up? Will it be fine then, like this? Okay, you can always guide me on the positions, because live sessions, as you know. So yes, welcome to Bratati science class, class 10, and chapter number 1, which is about chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. Those who are joining at 11 a.m. It's okay, because I have another things in line, so I have to go somewhere to pick my daughter from the school. That is why I have started a little earlier, but it's okay, you can join in the between. So first thing that we have learned before in lower classes like 7, 8, 9, we have gone through the changes. That all the change is only constant, right? So there are two types of changes basically, the physical change and the chemical change. The physical change, when we see the change is happening through the states, for example, the state of matter, I mean the states of matter. The matter is any substance that has a mass and the weight, right? And the change can be physical change, where I can see the, a paper, okay? It can be a paper, and if I say I am tearing the paper, it's still the paper, right? This is a big paper and this is a small part of it. I have done something change, but it's still the same material. So this is kind of physical change. And also, if we think on the example of the ice is in the solid state of matter. If you keep it in the room temperature for some time, due to the heat, it will melt to water. And now this water you are boiling, you are trying to make a cup of tea. So then when you are boiling, you are applying heat to it. From the liquid state, it will be vaporized. It will go to the gaseous state. So this kind of changes, we can call them physical change. Did anybody join till now? I am not able to see anybody has joined. So let's continue. The change are of two types. Basically, that is physical change and one is chemical change. So in physical change, as we know, no new substance is formed. But in chemical change, yes, a new substance is formed and it cannot be back to the original state again. But physical change, where the new substance may form, but it can be back to the original state. Like I give you the example of the states of
change in the matter. Like ice to water, water can be back to ice, and that is the freezing. When we put the water in the ice tray box and put it into the refrigerator, they turn into the ice cubes. So physical change, we can write no new substance, but here new substance is formed. The change in shape, in state of matter, shape, size, or change in states, these are example of the physical changes. But here, for example, the paper is burned. If the paper is burned, we get it, like we don't get the paper back, right? Or if the coal is burned, the coal is burned, so we don't get the original coal in the right state. So these are the examples of the chemical change. So now let's move to chemical reaction. Is there anyone? I'm not able to see anyone till now. Okay, so let's move to the chemical reaction. What is a chemical reaction? Chemical reaction is something where a chemical change is taking place, right? A new substance is formed from where we cannot get back the original substance. At the same time, here if we do a chemical reaction, if we see a chemical reaction, only the number of the atoms can be changed. Like we can balance the equation of the left side to the right side. The reactants and the products, we have to balance it. So chemical reaction, what are the characteristics of it? So first we are going through chemical reaction. So RXN is nothing but reaction. In chemical reaction, it is obviously a new substance is formed. That is, the change is chemical change. So we can observe chemical change. Also, it can only rearrangement of atoms take place. One more thing, 10:30 or 11 am, if I take a live session, how many of you feel that this is the right time? Yes, sahi time hai. You can also put me in the comment that what is the suitable time for you to attend a live session. Agar night after 10 is okay for you, evening 7 PM is okay for you, you can just let me know that what time of a day is best for you to attend a live session. That will be really helpful. So rearrangement of the atoms takes place. The evolve means generate. Okay, the evolution of gas may take place. Evolution of gas may take place. For example, zinc plus sulfuric acid, we will get JnSO4 plus hydrogen gas is evolved. Or it can be a change in the color. Change in color. How can we see that? For example, Fe and CuSO4. We know CuSO4 is blue vitriol, which is copper sulfate is blue in color. Now when ferrous reacts with the copper sulfate, it produces green color FeSO4 and Cu. So this is basically CuSO4 is blue in color, okay, and it turns to green. So this is again a chemical change. Till now nobody has joined. Is it live session is going on? Almost 10 minutes over. That's okay. Now more other characteristics we are now moving to. Evolution of gas, change in color, evolution of heat, the change in temperature. Gas, evolution of heat also may take place. That is, the temperature may also change, and even the change of the state. Like solid, liquid, gas, aqueous, we can know the different states of a matter.
even we can see the change in that too. The next thing can be, that is evolution of temperature or change in temperature. For example, if you react the calcium oxide, which is known as the quicklime, and it is reacting with the water which is producing the slaked lime or calcium hydroxide. Along with it, the heat is generated. So here we can see the heat is evolved, the change in temperature. The temperature is more for the product, and this is the reactant. So from quicklime, when we get slaked lime, if you touch, you can see it is hot. Okay. The next is the change in state. The change in state, like solid, liquid, gas. For example, ammonia, that is a gas, and NH3. Ammonia is the gas. It is reacting with HCl, that is hydrochloric acid, and together this is also a gas, but they together form ammonium NH4Cl, which is a solid. This is ammonium chloride. So from gaseous state to solid state, sublimations we call, right? Like gas to solid. There is no liquid in between. So this kind of change in state also take place. So these are basically the characteristics of a chemical reactions and what all changes we may see. Shall we move to the chemical equation now? Alright. So now let's move to chemical equation. Chemical equation, we need to know the two terms. The two terms are reactants and products. So what happens here? Reactants, two or more, and that produce some new product, right? Reactants to product, that is the chemical equation. It can be word equation. There are two type of equation. One is the word equation, another one is the formula equation. Now in word equation, we can write the chemicals or the elements or the molecule in a word. Like we can write magnesium plus oxygen. Together they form magnesium oxide. Okay. Here magnesium and oxygen, these are the reactants, and the product is magnesium oxide. When we balance, then we write it equal sign. Equals to sign means the atoms in the reactants is equal to the number of atoms in product. But until we are not balancing both the side, we just keep an arrow. So this is basically a word equation. Till now I cannot see anyone join. And similarly, now I want this to make it a formula equation. So for magnesium we will write Mg, for oxygen we will write O2, and together MgO. It's not balanced as I am saying. It will be 2Mg plus O2 equals to 2MgO. Then it will be balanced. Anyway, so this is basically the formula equation, where instead of writing in word, it saves our time. Takes a lot of time if you write the word for each compound, for each chemical. It's difficult and time consuming. Instead, we can write down the formula. Okay. So these are the chemical equation, two types of chemical equation. Now, chemical equation can be again two types, balanced equation and unbalanced equation. For example, if I remove this, Mg plus O2 is MgO, I wrote. So you tell me, is this a balanced or unbalanced equation? Yes, it is unbalanced because the number of atoms in magnesium in reactant left side is 1. But here is 1. Oxygen here present is 2.
but here 1. So this is unbalanced equation. But if we add here 2, here add 2, now it becomes a balanced. So how to make the unbalanced equation to balanced one? We are moving to that now. So now, types of chemical equation. The chemical equation can be of two types, right? It can be balanced equation or it can be unbalanced equation. Now, balanced equation where number of atoms in reactants equals to number of atoms in product. So that is balanced equation. But when the number of atoms in reactants and product vary, that is not same, that is unbalanced equation. What to do to convert unbalanced equation to balanced equation? Now we are changing unbalanced to, we are making unbalanced equation to, we want to move to balanced equation. If I am going a little faster, that also please let me know. I wonder some few people join in the live session. 10 minutes to go. Okay, so now we are changing unbalanced equation to balanced equation. Okay, so if we convert, if we change the unbalanced equations to balanced equations, what should we do? For example, Fe, I am giving you for example, Fe plus water, Fe iron plus water, it is becoming Fe3O4 plus oxygen, Fe3O4 plus hydrogen. Now see, left side we have the reactants like Fe and H2O. Right side we have the product Fe3O4 and H2. So what we will do, first let us write all the elements here. Fe, we have H, we have O, that's it. Now we will write in LHS how many atoms and in RHS how many atoms. So in Fe we can see in LHS we have 1, in RHS we have 3. H in LHS we have 2, in RHS we have 2. O in LHS we have 1, RHS we have 4. So to make it 4 we need to multiply the oxygen number with 4 and this Fe to 3. So if we put now this 3 here, 3 Fe, and to make it 4, so we have to put 4 here. Now see, 3 Fe, 4O, 4O. But what about hydrogen? In hydrogen now, left side we have 4 2s are 8. And here we have only 2. So to balance this, what we need to do? We need to multiply. Here we now have 8, right? So we have 2 into 4, we have 8. To make it balanced in the right side also, we need to multiply it with 4. So here we have to put 4H2. So now this is the balanced equation. 3Fe plus 4H2O equals to, we can write, even if we can remove this and we can write equal sign because now it is balanced. Fe3O4 plus 4H2. And this equation is balanced now. Alright. Now, when we write an equation, we have to keep it in mind few things. Like, we can add few more information like whether the heat is evolved during the equation or it is absorbed
or what will be the states of different elements or compound, like whether they are solid state, gaseous state, aqueous state, that also we can write within the bracket. Alright, now moving to the types of reaction. So let's see what are the types of reaction. How many types of reactions do we know? We know there are combination reaction, there is decomposition. One by one we will learn in detail. There is displacement, reaction, double displacement reaction, and oxidation reduction. Reaction. So there are 5 types of reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation reduction reactions. Okay, so one by one we will see. First we will see combination reaction. So as we know, the main thing in chemical equation or chemical reaction is reactants and product. So more than 2 reactants, when they combine to form a product, that is called combination reaction. So for example, when we write that 2 or more, combination means reactants plus reactants, and then we get one product. These 2 reactants are combined together. For example, calcium oxide, HCl, together calcium hydroxide. Calcium oxide is the quicklime. Okay, and here calcium oxide, when reacting with the liquid water, that is becoming the slide line. So here 2 reactants, calcium oxide and the water, is being mixed together to produce the slide line, and this is the solid state. Also it generates the heat. So this is also a product. The heat is generated. We learned before, right? So reactant plus reactant is the product. In this kind of combination reaction, either the heat is generated, that is evolved. That kind of reactions we call exothermic reaction. And when heat is absorbed, those kind of reaction we call endothermic reaction. So here we learned exothermic reaction and endothermic reaction. Exothermic, when in the product, along with the product, the heat is also generated. But when it is endothermic, then heat is absorbed by the reactants to generate the product. Let's see. This is one example. Another example is respirations. We are breathing. We are doing the respiration. So there, you know, the food is produced when we eat some food. That is broken down to glucose, C6H12O6. And this glucose, when oxidized with the help of oxygen, it produces carbon dioxide, water, and the energy. So when we respire, breathing in, inhaling, we are taking in the oxygen, we are generating the heat.
That's why the respiration is an exothermic process. So let's see that example now. So that is basically two or more reactants is producing one product, that is carbon dioxide, water and the energy. So in respiration what happens? Respiration is, so in respiration the glucose C6H12O6 when reacts with oxygen they produce carbon dioxide, water and obviously energy. So respiration is, what should we say? This is exothermic. It is exothermic. If this is clear, let's move to decomposition reaction. It is just opposite to combination reaction. In combination, two or more reactants, they result in a single product. But in decomposition, one reactant breaks down to two or more product. So in case to the reactant, we have to apply heat or sometimes light or electrolysis. So there are types of decomposition reaction. So number 2 comes here, decomposition reaction. In decomposition reactions what happens? That from one reactants we give either heat or light or electrolysis, we do the reactants and we get two or more products. That is decomposition reaction. Let's get example of calcium carbonate. When this solid we put enough heat, it decomposed into calcium oxide, solid quicklime and carbon dioxide gas. So we are heating calcium carbonate which is solid, and when calcium carbonate we are putting the heat, it is breaking down to calcium oxide and carbon dioxide. This is again in solid state. So two or more reactants is formed. Okay? We will see the types of decomposition reaction. If anybody is there, please write in the comment. I am not able to see any comment as well. Okay. Now, types of decomposition reaction. If my timing is wrong, I am doing the trial and error method, audience. So if my timing is wrong, please let me know. If this is not your suitable timing, then what time I can record. Types of decomposition reaction. So here we can see by applying heat, and that we call thermal decomposition. In thermal decomposition, with the name you know, we apply heat where one reactant breaks down to two or more products. For example, the same one as I showed you, it is calcium carbonate. Now give some heat, then it will be break down to calcium oxide and carbon dioxide. The next one you can take it as electrolysis. You know we do electrolysis of water. In electrolysis, where the electricity is passed through the reactant, where the reactant is broken down to two or more product. Now if we pass through the H2O, then it will break down to hydrogen and oxygen. So the example will be like water, that will be electrolyzed to hydrogen and oxygen. Number 3 can be the photolysis. Photolysis where light is the reason behind the breaking down of the reactants. For example, the white color silver chloride solid 2 Ag cell. Now उसको अगर हमने
लाइट दे दिया, ज्यादा से ज्यादा द परफेक्ट टेम्परेचर एंड परफेक्ट लाइट दे दिया, तो दैट विल बी ब्रोकन डाउन टू सिल्वर, जो सिल्वरी कलर का होता है, राइट? तो वो हो जाएगा 2Ag प्लस 2 क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन में वो डिवाइड हो जाएगा, उसके साथ उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है, बिकॉज व्हेन इट वाज सिल्वर क्लोराइड दैट वाज अ व्हाइट कलर कंपाउंड, लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद अगर 2Ag दैट इज अ सिल्वरी प्रोडक्ट प्लस 2Cl2 जो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। सो इसमें फोटोलिसिस में क्या होता है, यू कैन टेक 2AgCl और इसको अगर ब्रेक डाउन है तो दिस विल बी 2Ag प्लस Cl2, ठीक है? सो इसका कलर व्हाइट रहता है, बट आफ्टर द रिएक्शन यू कैन सी दिस इज द सिल्वर कलर और उसको येलोइश ग्रीन कलर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 और मोर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। थर्ड वन वी विल मूव टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए डिस्प्लेसमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो जाते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई कोई एलिमेंट बहुत ताकतवर होते हैं, सो सम एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन द अदर्स, और उसका भी एक सीरीज रहता है जो है रिएक्टिविटी सीरीज। सो हम पहले पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एटम्स, जो एलिमेंट्स ऊपर रहता है दे आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्गर, नीचे जो रहता है दे आर वीकर देन देम। सो अगर नीचे वीक एलिमेंट के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का रिएक्शन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव सब्सटेंस। सो पहले देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है? सो रिएक्टिविटी सीरीज इसके बारे में बोल रहा है। द रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जिसमें मेटल्स आर अरेंज्ड, मेटल्स अरेंज किया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है? तो इसमें मैं आपको निमोनिक्स देती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो है कि पहले मैं लिखती हूँ प्लीज सेंड lions, cats, please send lions, cats, monkeys and colorful zebras in handy cages with security guards, security guards। तो ये हो गया एलिमेंट्स का सीरीज। सो प्लीज, ये प्लीज से P फॉर पोटेशियम, send, S for sodium, I am writing here the formula, the chemical formula of the metals or compounds, or you can say the elements. Lions, lithium, cats, calcium, monkeys, magnesium, दिखाई दे रहा है इसको, Mg, magnesium, and aluminium, colorful carbon, zebra, zinc, in iron that is Fe, zinc, then iron जो है Fe, handy जो है हाइड्रोजन H, cages Cu, copper, security guards that is silver, silver मतलब Ag, guard, guard is gold that is Au। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, आपको दिखाई दे रहा है the reactivity series। Please send lions, cats, monkeys and colorful zebras in handy cages with security guards
जो कि है पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड Au। अभी बताओ, आई एम गिविंग यू वन रिएक्शन जो है Zn प्लस H2SO4, ठीक है। अगर ये है, हाइड्रोजन किधर है, इधर है, जिंक किधर है, इधर है, सो जिंक इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन को हटा देंगे। भाई तू हट, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, सो हाइड्रोजन को हटा देंगे और खुद बन जाएंगे ZnSO4 और ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है। सो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल विद कॉपर, कॉपर ले लिया, Cu प्लस H2SO4, ठीक है। सो कॉपर किधर है, कॉपर है इधर, ठीक है, और हाइड्रोजन किधर है, ऊपर। सो हमने क्या करेंगे, हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, तो कॉपर को जाने देंगे, कॉपर बोलेंगे नहीं भाई आप ही महान हो, मैं आपको रिप्लेस नहीं कर पा सकती हूँ, सो दिस इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस इट। सो Cu के साथ अगर हो गया रिएक्शन, सो Cu लेकिन उसको नहीं कर पाएंगे, H2SO4 को नहीं कर पाएंगे, लेकिन Cu किसको कर पाएंगे, Fe किसको कर पाएंगे, Fe H2SO4 की जगह पे मैंने दे दिया FeSO4। अगर FeSO4 है सो कॉपर नीचे है और फेरस ऊपर है, सो फेरस इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, सो कॉपर को हटा देंगे, हाँ, सो फेरस इज स्ट्रॉन्गर, तो मतलब ये होगा कि नहीं होगा, सो ये नहीं, CuSO4 अगर है तो नहीं हो सकता, Cu के साथ FeSO4 का कोई रिएक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाउ इफ रिएक्टिविटी सीरीज इज क्लियर, वी आर मूविंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें द स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जो है रिएक्टिविटी वाइज दैट विल डिस्प्लेस द वीकर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। सो ये जो रिएक्शन है इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जा रहा है, इसमें द स्ट्रॉन्गर एलिमेंट will displace the weaker element in the reaction, ठीक है, according to reactivity series के ऊपर डिपेंड करते हुए that will depend। so ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं आपको हटा दे रही हूँ, हो रहे, लेकिन इसके बाद आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में भाई भाई रिलेशन रहता है, भाई तू भी अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ जा, मैं भी अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ जाऊंगी। ऐसा रहता है कि टीचर आया क्लास में, सो टीचर इज चेंजिंग द प्लेसेस, नो यू बोथ टॉक टू ईच अदर, आई विल चेंज द प्लेस, आप इधर जाओ आप इधर आओ, ठीक है, टीचर ने कर दिया। सो इसके बाद टीचर जैसे कि निकला, दोनों फिर से पलट के अपनी जगह पे बैठ गया। सो दिस इज काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। एक ही को क्यों हटाना है, दोनों को हटा के चेंज करके सूटेबल पोजीशन में बिठा लो। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है व्हेन बोथ द म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द एलिमेंट्स और द आयंस, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। सो रिएक्टिविटी सेंटर इज ओके, देख लिया, हु आर स्ट्रॉन्गर हु आर वीकर, और रिमेंबर द निमोनिक्स, अच्छा लगे तो निमोनिक्स को यू कैन remember to help you out to find out this kind of reaction equations and all, ठीक है। सो नंबर 4 जो हो रहा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो है म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन the ions और the elements, कैसा, both, जैसे कि एग्जाम्पल
सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसके साथ आ गया BaCl। सो बेरियम क्लोराइड आके क्या कर दिया, इसको बना दिया NaCl और इसको बना दिया BaSO4, बैलेंस नहीं किया हुआ है। सो 2 NaCl अगर किया तो 2 NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। सो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अभी कैसे एक्सचेंज हुआ, द सोडियम इज नाउ सोडियम एंड क्लोराइड जुड़ गया और बेरियम और सल्फेट जुड़ गया। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लास्ट टाइप जो रहता है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वो है फिफ्थ टाइप। The fifth type of the reactions are the oxidation reduction reaction. हर equation में if you see carefully all the equations are oxidation reaction reactions only. एक one element or one compound is getting oxidized, the दूसरा one, the other one is getting reduced. तो इसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सो इसके मतलब जो साथ में है, the other reactant is helping the other element or compound to get oxidized, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, ट्रैवलिंग एजेंट, ठीक है, एजेंट ब्रोकर ये सब रहता है जो खुद कहीं नहीं जाते। ट्रैवलिंग एजेंट खुद आपके साथ जाते हैं जनरली नहीं, वो अरेंज कर देता है, आपको इधर से उधर जाने का है, पूरा आइटिनरी ये है, आप पैसा दो आप जाओ। So that is the work of agent. So here also we have the oxidizing agent and the reducing agent. So this is oxidation reduction reaction. So इसमें क्या होता है, what is oxidation? Oxidation में when there is a addition of oxygen, either it is the addition of oxygen or it can be the removal of hydrogen। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है जिसमें होता है उल्टा, उसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और नहीं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। नाउ इसमें अगर आपको एग्जांपल दिया ZnO जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन, ये मिलके हो रहा है कार्बन मोनोक्साइड एंड जिंक, ठीक है, जिंक हो गया एंड कार्बन मोनोक्साइड हो गया। सो जिंक से जिंक ऑक्साइड से जिंक हो गया, सो ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव्ड, ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। सो अगर ये रिडक्शन हो रहे हैं, सो दिस कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करने में मदद कर रही है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। नहीं कोई तो ज्वाइन नहीं किया, ये सेकंड जो लाइव सेशन था इतना खास नहीं गया, इट्स ओके। आई विल क्या करूँगी, मैं इस वीडियो को वैसे अपलोड कर दूंगी क्लास 10 पे, बट नेक्स्ट टाइम से लाइव सेशन कब लेना है प्लीज राइट इन द पोस्ट, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा। सो ये हो गया कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें देखो कार्बन हो गया कार्बन मोनोक्साइड, अगर कार्बन हो गया कार्बन मोनोक्साइड मतलब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया मतलब दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। सो इफ द कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, हियर जिंक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप ये क्लियर है आपको। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ टुडे सेशन, जिसमें हम करेंगे ये जो ऑक्सीडेशन होता है इसका इफेक्ट डेली लाइफ में कैसे पड़ता है, और उसमें भी हम दो इफेक्ट्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट टू इफेक्ट्स दैट हैपेंस ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, एक है कोरोशन और सेकंड है रैंसिडिटी। कोरोशन इज व्हेन द मेटल इज डिस्ट्रॉइंग, मेटल मतलब आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है,
हमने देखा होगा ना सिल्वर के बैंगल, सिल्वर का ऑर्नामेंट्स थोड़ी देर बाद ब्लैक हो जाते हैं, उसको रिमूव करना पड़ता है पॉलिश। इवन द गोल्ड, उसका जो शाइनिंग पार्ट, वो जो ब्राइटनिंग और डार्जलिंग था, वो धीरे धीरे मिट जाते हैं और उसकी वजह से वो थोड़ा ग्लॉसी नहीं दिखता है। सो सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, आई मीन सिल्वर के ऊपर, इवन द आयरन के ऊपर रस्ट गिरता है। सो ऑल द मेटल्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। आइदर दे विल मेक सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, कोई भी तो दूसरा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर देयर इज अ लेयर आ जाता है। उसको रिमूव करें तो फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से वो ऑक्सीडेशन में रह जाते हैं। सो फॉर दैट यू नो गैल्वेनाइजेशन, यू नो दैट रस्टिंग प्रोटेक्शन करने के लिए what we do coloring, we do painting। ये जो रस्ट, वो जो बेंच रहता है ना, लोहे का बेंच, और वो उसमें खाक हो जाता है। So for that we do this regular painting and all, so that ultimately it is getting protect from the air and the water। रेन में, एयर में, विंड के साथ हमेशा रिएक्शन नहीं होगा for certain time being। फिर सोने को भी हम बोलते हैं ना, उसके ऊपर लेयर्स है, सिल्वर का भी है। So that is basically we are talking about corrosion। So देखते हैं वो इफेक्ट क्या होता है। सो दिस इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लेता है ना, और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी चले जाता है। सो दिस काइंड ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट में चेंज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ द एयर एंड द वाटर। सो बेसिकली नाउ वी आर मूविंग टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन reaction in daily life or oxidation या with in presence of air and water। so क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं कोरोशन। कोरोशन में क्या होता है, जैसे कि Fe हो या सिल्वर हो, उसके ऊपर द प्रोसेस ऑफ स्लोली डिस्ट्रॉइंग द मेटल, स्लोली डिस्ट्रॉइंग द मेटल as the metal is converted to कोई ऑक्साइड, कोई सल्फाइड, कोई सल्फेट, ऐसा डिफरेंट आइटम्स में बदल जाते हैं, कन्वर्टेड टू दिस। ठीक है, जैसे कि Fe, रस्ट क्या होता है, रस्ट होता है Fe2O3, X H2O, ठीक है ना, ये रस्ट हो गया। अभी सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड का पढ़ते हैं, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट पड़ता है। कॉपर के ऊपर पड़ता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का ग्रीनिश हो जाते हैं। कॉपर के ऊपर CuCO3 ग्रीनिश कलर का, वो कॉपर के ऊपर भी प्रेसिपिटेट आ जाता है। सो दिस इज द कोरोशन। ठीक है, सेकंड वन इज द रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी होता है, अभी जो खाना है ना, द फूड, द एक्सेस फूड, क्या करते हैं हम, टेबल के ऊपर खाना है, सबका खाना हो गया, मम्मी सोने के लिए चले गए हैं, आपको बोल के गया है आपका खाना हो गया तो आप फ्रिज में लगा दो, लेकिन आप भूल गए। यू हैव टू रिप्लाई टू योर फ्रेंड्स, टू SMS एंड व्हाट्सएप, और जो भी है आपको सोना है, आप कैसे भी भूल गए। द फूड, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू ओपन द लिड, very foul smell come out of the food. The food is spoiled, nobody can eat it, we have to throw it। क्या मतलब है, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, ठीक है, और उसमें जो फैट्स और ऑयल्स रहता है, the foods made up of the the saturated unsaturated fat रहता है, ऑयल्स रहता है, that actually get oxidized। ऑक्सीजन तो है एयर में, सो ऑक्सीजन का जितना भी लीड डालो ऑक्सीजन अंदर आ ही जाएगा। सो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उन्होंने ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। व्हेन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, सम डिफरेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड,
और एज इट्स अ केमिकल चेंज, उसका एक फोल स्मेल है जो हम नहीं खा सकते। तो हाउ टू प्रिवेंट इट, ये रैंसिडिटी से कैसे बच सकता है? पहले तो ये है कि एक्स्ट्रा फूड प्रिजर्व करो, यू हैव टू इन द लो टेम्परेचर, फ्रीजर में रख दो। नंबर 2, यू कैन पुट एयर टाइट कंटेनर, जो बहुत मम्मी लोग को पसंद आता है, राइट? सो एयर टाइट कंटेनर में फूड रखो तो देन यू हैव टाइट इट, द एयर और द ऑक्सीजन स्पेशली विल नॉट स्पॉइल द फूड. यू कैन कीप इट फॉर फर्दर यूज, फॉर लॉन्गर यूज. जनरली जो लंच पैक होता है, लंच बॉक्स, मोस्टली ट्राई टू मेक इट एयर टाइट, जो लॉन्ग टाइम के लिए सही रहेगा. थर्ड, चिप्स पैकेट देखा आपने, इतना फुल ऐसा है, व्हेन यू ओपन इट, अरे इतना ही चिप्स था, मैंने सोचा इतना है, नहीं. चिप्स पैकेट में इट इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, जो लेस रिएक्टिव है, जो ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करते. सो नाइट्रोजन गैस उसमें फिल्ड अप रहते हैं, राइट? तो वो हो गया नाइट्रोजन फिल्ड अप टू द पैकेज फूड. और सबसे बड़ी बात, अब खाने पे प्रिजर्वेटिव के हिसाब से एंटीऑक्सीडेंट यू कैन डाल सकते हैं. BHA, BHT, दैट इज BHA, BHT क्या होता है? ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये सब होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो प्रेजेंट रहे तो दे आर नॉट अलाउइंग द फूड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड रीडली. ठीक है, सो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रैंसिडिटी. और रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी इज द food, the element, the nutrients, the fats. So let me write directly the fats or oils in food get oxidized and foul smell comes from it. It is called rancid food. And उसके लिए हमने सोचा कि इसका प्रिवेंशन. So how to prevent the rancidity? उसके लिए you can use BHA, BHT antioxidants, or in packaged food, fill with nitrogen gas. Number 3, put food into refrigerator, food in freezer, freeze, or use air tight container. Use air tight container. So these are the prevention of rancidity. So with this we end the live session. I'm very sorry if I'm in the wrong time, but I hope you learned something new and you enjoyed the session. So see you in the next class. Till then, put on your comment. If not subscribed yet, please subscribe and like if you like the video in any of the part, and share with your friends. So take care. Bye bye.